कैसे हैं दोस्तों। और हम जो है ये नेक्स्ट वाला वर्जन कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे जो है यहाँ पे बंदे हैं, तो हम जो है बम से ही जो है शुरुआत करेंगे। और टेक्नोमैंसर जो है अरे अपने आप ही मतलब ये बंदा तो यार बेहोश हो गया। मतलब जो टेक्नोमैंसर था उसने खुद को ही और अपने जो है जोड़ीदार थे उन सबको भी जो है सुला दिया है। ये मतलब हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। चीज़ों को लूटना जो है हमारा मेन काम है। द प्लेस ऑफ एक्सप्लोजन, राइट। यहीं से जा सकते थे, यहाँ से भी जा सकते हैं। शॉर्टकट ही पकड़ते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लोजन हुए हैं, लेकिन ये जो है बंदे भाई इनको और ये इसको तो चलता ही मतलब रहना है यार। ये क्या है। सो अच्छा, ये वाला जो रास्ता जो पहले इनएक्सेसिबल था अभी एक्सेसिबल हो गया है। अरे ये कौन है? ये तो मैरी है। जो अप्रेंटिस थी पार्ट 1 में, वही लड़की। पर क्योंकि हम लोग आरपीजी खेल रहे हैं तो पहले आजू बाजू देख के जो है चीज़ें लूट लेंगे, क्योंकि भाई पता नहीं बाद में ये वाला सीन हो या ना हो। ओके, कुछ नहीं है। What the hell is she doing here? Won't take long for a patrol to show up. I better get her out of the way. ओके, सो क्या कर रहा है भाई? There you go. Looks like she's waking up. Did you really think you could kill my master and get away with it? After running away with your tail between your legs? You thought a weak woman would never come after you, didn't you? Feminism. Mary. Like you said, your master didn't give us a choice. You're exhausted and really worked up. I feel weak. But when I got here, I was full of anger and power. What has happened to me? You had an overload you couldn't get rid of. Young technomancers are almost never told about things like that. It makes it harder for them to escape. You were alone and all that power took over. Now you're empty. You should rest. I feel awful. Like I've been ripped to shreds inside. Of course, The man, overload come was on. too strong. You need help. I'll go find some medicine so you can recover. ठीक है। Here, take this. It'll prevent any internal bleeding and get you back on your feet. I should thank you, shouldn't I? If I join you, will you teach me to control the overload? I could teach you how to do that, yeah. Some people even learn to use the overload without suffering too much from its effects. Are you going to sleep with me? Sean did. Wow. Okay. You owe me that much? Come on यार, अपना हीरो ऐसा नहीं है. I don't find you okay. She is attractive, of course. If it happens, I want it to be because you wanted to, not because you feel you have to. You could help me a lot, Mary, but you're not my slave. Maybe, but I want to survive. And if that's what it takes, it doesn't matter. I'll say it again. You don't have to, Mary. You should only give your body to someone if you want to, not treat it like a piece of meat. Before now, everyone used my body in exchange for my life, or for knowledge.
I'll think about it. Thank you, Roy. So we are playing Roy, the good guy. Okay, face. Hello, Roy. I was one. You don't want to change what you're wearing? You're dressed as ripped to shreds. Not really, discreet. This dress reminds me of who I am. It's a testimony of my shredded past. I've lost so much due to my ignorance. Today, I am what I am. A pariah. A renegade hunted by my peers. But also a new woman. Free to determine her own conventions. Without bonds. ओके sarcastic आंसर दे सकते हैं but I okay. suppose I can understand that. You're a little lost here. It's your last link to your past life. Alright, fine. We'll go on like that. How did you become apprentice to the warden of a prison camp? It's a long story. I'm sorry. I really don't know you. I'd rather talk about it some other time. What are the Abundance Technomancers like? Do they have the same status as here? I don't know much about it. But from what I saw, the people are afraid of them. Just like here. Even though they'll never be allowed to hold the highest offices. But they're in the army. They're officers. They are not allowed to form cliques or teams. A master is simply allowed an apprentice, nothing more. They're primarily a military unit. For the battlefield. Nothing more. Why did you take the risk of following me? You would have kept your status and rank with Abundance. I was so angry. Livid with rage. Sean had saved and protected me. I wanted to avenge him. Now I see that he was using me. But how was I to know that then, when he was all that I knew? I followed you for one reason. To kill you. You said he saved you? Yes, I'm sorry. I don't really want to talk about it. He must have been mistaken. Come on, Mary. You're not really a normal kind of person. All right. I suppose I can tell you. I was born here, in Shadowlair. It didn't take long for the Source to find me. I think you had already left. Or I was too young, and you were too old for us to be together. How did you end up in Abundance in that case? My master at the time had to go fight, of course. And he wanted to take me with him. The Source wanted to refuse, but he had tremendous influence. I found myself on a battlefield, and I was horribly afraid. I think I panicked, and we were separated. Go on, I'm listening. I was so afraid I fell into a trench. Some men from Abundance came towards me. They were laughing. I think they liked the look of me. And then their officer showed up. It was Sean. He seemed really strict. In fact, he was furious with his men. He helped me get up and kept me near him. I know that he had to fight to keep me. That's why he was sent from the front and ended up in Camp 19. Why not talk to me about it? I was afraid you'd abandon me to the Source. Of course, there are good masters there, but there are also... Anyway, I often served them when I was very young. Sick. Listen, I'm sorry, Mary. I know some girls are abused, but... Anyway, it's over now. You're free of them. You must have a virtue name. Mary's not your real name, is it? Right. I was called Mercy, but the name no longer means anything to me. Even if Sean used me, he helped me live again. He stopped me from going insane. He's the one who called me Mary. Just like the rags I'm wearing, I want to keep the name.
I understand. I'm not gonna lecture you about changing your name. How did you end up in a I All right. We did. Okay. Let's. You still don't. I want to tell. Come with me. It would be a pleasure. I prefer it when I'm with you. Wow. Okay. That's kind of weird. But yeah. Okay. लेट्स सी कि भाई हमारे कैरेक्टर को 3 पॉइंट्स मिले हैं जो कि हम अभी कोई यूज़ कर नहीं सकते, कोई भी पॉइंट्स मीनिंग नहीं है, सो लेट्स कंटिन्यू। ये कौन है? Mr. Temperance, I'm Devotion. General Honorgrant sent me. He'd like to talk to you. Strange kind of invitation, seeing how they're looking for me. I thought I had observed all the formalities. Please forgive me. If you fear for your life, please understand that the General does not currently wish you any harm. Currently. Now that's a relief. Are you sure you're normal? I Oh. believe so. On the other hand, I am only following the orders I've been given. Given your current situation, I suggest you go to him through the Tyrville Underground. You sure got the right name, don't you? Devoted, calm as they come. Yeah, all right, I'll go. And me? Am I invited too? I think you can come too. We didn't know Mr. Temperance had a companion. That explains why the invitation didn't mention you. Please forgive us. I think I'd like to go too. Okay, let's go together then. Weird, but okay, let's. The General's waiting for you in his quarters. Once again, seeing as how you're a fugitive, we suggest you go by the Tyrville Underground and get there. Not much of a talker, right? Okay. So, हमारे जो है साइड क्वेस्ट में ओके एक ट्राई टू नो मोर अबाउट मैरी है और मीटिंग विद द जनरल। सो बेसिकली जो है ओके कहाँ पे थे? यस, सो बेसिकली जो है साइड क्वेस्ट जो है ख़त्म हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है मुझे, और हम जो है टीयर व्हील की ओर दौड़ सकते हैं। सो ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है। अरे हाँ वो गार्ड यार, कम ऑन, फिर से रिस्पॉन होंगे, देखा? ओ यार ये वो नहीं, मुझे नहीं, मत मारना। ये कंपेनियन काफ़ी पावरफुल है मैरी। सो टेबल में जो है वापस जा रहा है, बहुत सारा आगे पीछे बहुत सारा हो रहा है। और यहाँ पे भी जो है ओके अंडर सिटी जो है इस साइड है होगा, स्पॉन नहीं है, सरप्राइज। इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे स्पॉन है। सो बेसिकली गोल घूम के जो है इस वो वाले बंदे के पीछे से जो है मार सकते हैं, और ये वाले बंदे के पीछे से। मैं मर गया भाई, वो
एक्चुअल में मार डाला। बंदे को ख़त्म ही कर देना है। ये वाला जो है रास्ता सीधा सीधा वहीं पे जा रहा है। हम लोग भी जो है इसको कम ऑन। क्या है क्या इसके अंदर? आई सपोज कि हम लोग जो है इसके बारे में बाद में कुछ जो है जानकारी देंगे। फ़िलहाल के लिए अंडर सिटी जाना है तो ओके, यहाँ से नहीं। ये वाला बंदा मतलब यहाँ पे खाली पीली जो है फाइट का खर्चा बचा लिया कि यार मतलब एक की एक फाइट और कितनी बार फाइट करे। भाई मुझे क्यों मार रही है? मतलब हमने क्या बिगाड़ा था कि आपने जो है हमें मारने की कोशिश की है? मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ये। मतलब अभी चलिए यहाँ पे है तो ओके, आयन बार दोबारा से मिला है, उसको बेच देंगे बाद में, कोई बात नहीं। क्राफ्टिंग किट में जो है एक्सप्लोसिव क्राफ्ट करता है, हैंड ग्रेनेड। बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स भाई। एक ट्रैप भी अपने को नहीं चाहिए। इंजेक्शन अरे वो मर्चेंट बाहर ही खड़ा था यार, सस्ते में बेच रहा है। चलो कोई बात नहीं, इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं है अभी तक। अपग्रेड करने के बाद जो है चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी है। हाँ तो अभी क्या करें? एक्सेस तो ब्लॉक है भाई, तो कहाँ से जाना है हमें? अच्छा भाई पूरा रास्ता ही गलत पकड़ लिए हम। पूरे का पूरा जो है रास्ता ही जो है हमने गलत पकड़ा है। कल पहले मैप को देखना चाहिए था, तो उससे जो है ज़्यादा आइडिया आता। तो चलिए इस बहाने टीयर व्हील की जो है एक मुलाकात हो गई। फाइनली बच गए। लड़ना नहीं है, तब बोर हो गए। सो शैडो लेयर में हमें जो है एक्चुअल में जाना है स्लम की ओर, और वहाँ पे से जो है वहाँ से एक्चुअल में
आई थिंक पहले जो है एक रास्ता था स्लम के अंदर जो कि इनएक्सेसिबल था, सो बेसिकली वही रास्ता जो है दोबारा से पकड़ना पड़ेगा। अरे यार ये फिर से मतलब हाँ हाँ काफ़ी सेटिस्फाइंग है। ख़त्म कर दिए। बिल्कुल यार, जब आप जो है रिस्पॉन होंगे तो आपकी हालत भी जो है ऐसे ही होगी। सो हम बताना चाहेंगे आपको कि भाई रिस्पॉन ना हो। मैरी कहाँ गई? ओ यार सो जो इनएक्सेसिबल वाला रास्ता था ये वाला, जो कि अभी एक्सेसिबल हो गया बिकॉज है ये वाला मतलब काफ़ी जो है टूटी फूटी चीज़ें हो गई है, तोड़ दी है चीज़ों को यार, मतलब पूरे का पूरा। और भाई ये बेसिकली जो है हम पहुंचने वाले हैं। और ये कौन है? हेलो, तो इधर ऐसे बैठा हुआ है बंदा। यार ये फ्रेंडली फायर बहुत कर रही है। लेकिन पावरफुल है। पर बंदे काफ़ी चिल होते हैं यार, मतलब यार फाइटिंग जो है इनके आसपास फाइटिंग हो रही है, ये बंदे जो है साइड में मतलब ऐसे ही खड़े होके तमाशा देखते हैं। मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो है बंदों ने कुछ ना कुछ तो मतलब जो है ढूंढ ही लिया होगा। कमाल है, मतलब कमाल है। यार ऐसी जो है भाई अपने आप ही मर गया है ये। City pretty quick. थोड़े से स्मॉल एरिया में फाइट थी जो काफ़ी अजीबो गरीब किस्म की फाइट थी। आई मीन ओके कुछ लूट वूट तो नहीं रहेगा। नो 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 नो। ओके सो ओके ये साइड पे क्या है?
चिल है, मतलब बंदे एकदम एकदम से चिल है, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही चिल है। वेल लड़ाई हो रही है तुम लोगों के आसपास यार, कुछ तो शर्म करो जनाब। अभी ये देखो आराम से सो रहा है। कैसे कैसे बंदे होते हैं यार। तो चलिए जा रहे हैं हम लोग अंडर सिटी में। नहीं मतलब ऊपर वाली सिटी तो देख ली थी, अभी अंडर सिटी में क्या है वो देखना पड़ेगा। मुझे ये अचानक से हॉरर पिक्चर की क्यों वाइब्स आ रही है। ओह ओह, तो ये हॉरर पिक्चर वाली ही वाइब है, क्योंकि ये बंदे जो है घूम फिर के। सो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा एक कनेक्शन जैसा है, बहुत सारे जो है मुझे लग रहा है मॉल्स होंगे यहाँ पे। सो हेड ऑन नहीं लेते या फिर स्नीक करते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। गोल घूम के वापस ही आना है। The access looks blocked. The access looks blocked for the moment. नहीं कर सकते, ब्लॉक किए बे। ये मॉल जो वन साइडेड फाइट जो कि हम जो है जीत चुके हैं आराम से। सो काफ़ी तो डरा रहा है हमें। और देखते हैं इस साइड कुछ नहीं है, काफ़ी जो है लीनियर सा एरिया है। सो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये वाला बड़ा है, इसको जो है पीछे से अगर मार सक। अरे यार ये तो सामने ही। स्टन मार दिया। ये स्टन वाली चीज़ जो है, स्टन वाला स्टन वाला स्किल पॉइंट जो है काफ़ी काम का है। लूट लूट लूट, बहुत सारा लूट। ज़िंदगी में हमें और क्या चाहिए, बस चाहिए थोड़ा सा लूट। ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। आई थिंक ये जो है हमारा एग्जिट है, पर
ऑफ कोर्स हम लोग एग्जिट पे नहीं जाएंगे क्योंकि भाई पहले जो है स्क्रैप मेटल और सारी चीज़ें जो जो भी मिले हर एक चीज़ों को जो है लूट लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अभी कितना गेम बाकी है। आई थिंक स्टोरी वाइज तो अभी कुछ इतना प्रोग्रेस दिख नहीं रहा। और बेसिकली हम जो है हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच चुके हैं। आवाज़ आ रही है और सामने ही खड़ा है, दो है। स्टन मार दिया। अभी जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मार सकते हैं। स्टन काफ़ी पावरफुल है, सो वो तो है। देखते हैं यहाँ पे जो है जो रास्ते पे हम लोग पहले नहीं आए थे उस जगह पे कुछ मतलब कितना लूट है। ओके, लूट तो आई पर साथ ही साथ जो है बम फोड़ना है भाई। हाँ, मैरी काफ़ी पावरफुल है अगर उसे टाइम मिले तो। पर मतलब टाइम जो है मिलना चाहिए तो ही जो है ये लड़की मतलब कुछ कर सकती है। अच्छा रास्ता खोल दिए। Yes, what do you want? Of course, The name is meeting. Roy. Roy Temperance. I have a meeting with General Honor Grant. I was told to come here. Yes, you can enter. Interesting. Hi. You're expecting me, I think. I am. Good to meet you. Really? Mind telling me what you want from me? I have heard you are being hunted as a renegade. Rest assured, I have no intention of giving you up to the Source. To be perfectly frank, I'll admit I'm not very fond of them. And they feel the same way about me. But I'm high enough up the ranks that they can't do much against me, or those who work for me. Ah, I think I'm starting to see what you're getting at. All right, listen. I'm trying to understand how they got so powerful. I am worried. So I decided to put together a group of people to find out. You already know Devotion. She's my eyes and sometimes my hand. I'd like you to join her in the group. But I'm sure you have questions. I have one. You say you never liked technomancers, yet you ask Roy for help. I know how to tell the difference between the technomancers from the Source and a renegade girl. And even if you obviously have the same skills and are a bit disturbed, you'll understand that I'm not worried about you betraying me. Neither of you will find the Source and reveal the existence of my little group. And both your skills and knowledge of the enemy will be useful to me. More questions? You're in the government, you work with the Technomancers, and you're best friends with dear Dowser Wisdom.
Why in hell would I join a group under the thumb of corrupt and murdering people, huh? General, let me make him eat his words. No, Devotion. It's a good question. I put up with the Technomancers and their madness more than I work with them. As for the murders, I suppose you're referring to the disappearances in the militia. That is their work, not mine. Even if I can't understand the reasons for it. And as for the corruption, I think you're mistaken. I'm no saint, but I can say that today I am the only defense left against the Technomancers' coup. You're being hunted, tracked by the Technomancers, as you know. If you have my protection, they'll have to leave you alone. Mm-hmm. I know you're a friend of wisdom. This group kind of looks like treason to me. You are mistaken. It is, on the contrary, my duty to protect my friend and Dowser from what threatens him. In this case, the Technomancers. I don't know how they've managed to convince him to give them so much power. Just like me, he knows that you are unstable. That's why they didn't have that much power before. But they are gaining strength, and I have to protect Aurora and Wisdom from their schemes. Mm-hmm. And Devotion? You make her sound like your crony. Who are you exactly anyway, miss? The General told you, I am his eyes and hands when there must be killing. He took me in before the war. I was only a child. Since then, I have been showing him my gratitude. You can trust her as much as me. As long as you don't betray me, of course. Mm-hmm. Why not help the Resistance if you want to go against the Technomancers? After all, they have pretty much the same goal. Not really. I know they hate the Technomancers as much as I do. But they are idealists. And they want to change society. Power to the people. Mm-hmm. Allow me to tell you that that is as credible and inoffensive as what we are faced with from your former colleagues. Chaos. And in a few months, an invasion by the neighboring guilds. I did not win the war against Abundant to see my guild devoured so soon after my victory. Those people may have good intentions, but they're dangerous. I'm sure you understand it's not the kind of decision you make just like that. I need time to think. I understand. And I have to admit that I find that reassuring in a way. You deserve your name more than it would appear. Temperance. I'll get back to you in a while. Thanks. I'm going in that case. Goodbye, Aurora. But don't forget, if you have even the slightest feeling for Aurora, I am its last defender. इंटरेस्टिंग. ओके, सो हम लोग जो है सैंड में वापस आ गए हैं. आई मीन वेल इट्स बेटर एक्चुअली. ओके, सो बीचों बीच. ओके, हमें बीचों बीच ही छोड़ दिया. क्या बात है, मतलब क्या ही बात है. सो ये वाला जो है वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन सी यू अगेन.